just recording. So yesterday, like we started with the concept of security, and then we have discussed like what is the overview of security. We even have discussed what are the different types of licenses there into the Salesforce, right? So let me once again revise in a very quick way. So if you go to the company profile and you click on the company information, so apart from the basic details of your company, if you just scroll it down, there is a section user license. So on this user license section, we are going to see, all of the licenses that we do have with this edition. So basically this one is a developer edition, right? So in the developer edition, these are the licenses that is being provided to us from the Salesforce. Basically, there are two important licenses over here. One is the Salesforce license. The second is the platform license. These two are essentially important licenses. Now, if we discuss about this, how many Salesforce licenses right now we have? As you can see, we have been given two licenses, but one has already been consumed. Why? Because when we create this, when we create this organization, we actually have supplied one of the email ID. This was the email ID. So with this email ID and this name, one user was being created. And this user, we are this user, we are this user. We are by default a system administrator. Why? Because we actually have created this particular organization. So if I click on the profile, so we are holding the system administrator profile, which is the highest profile, right? What could be given to a user, this is the highest profile. And for this profile, what is the license that is being given to us was the Salesforce license. So in every developer edition, we have two copies of Salesforce licenses. One is already being consumed for creating your own user. For creating the user, one has already been consumed, and we always left with, one license. Yes. So the second is platform license. We have all three platform licenses because there is no such user who is holding this license. Now, let me tell you the concept of internal and external users. Let me tell you this, what does it means by internal user and what does it means by the external user. So this is something which is essentially important to understand, internal and the external users. Now see this one is my Salesforce organization. Okay. Now we do have certain features, like first of all, let me talk about the Salesforce chatter. Let me talk about this feature, Salesforce chatter. By the way, Salesforce chatter is also called as collaboration cloud. So in our initial days, when we were learning this for the first time, when we were interacting, so I have told you that, there are so many different types of services, cloud services, like Sales Cloud Service, Marketing App Cloud, Database.com. Collaboration Cloud is your chatter. Then we have Education Cloud, Health Cloud, Salesforce IST, and PSP Experience Cloud. These are, Salesforce services has been distinguished into different clouds, right? So Collaboration Cloud is something called as chatter. The common name for Collaboration Cloud is what? Chatter. So we created this developer organization. It comes up with Sales Cloud, it comes up with Service Cloud, it comes up with Marketing Cloud. It also comes up with App Cloud, it comes up with the Community Cloud. This is Experience Cloud, jisko bolte hain. Okay? And it also comes up with Collaboration Cloud. So if you talk about this edition, the Salesforce Development Editions, the Developer Edition, how many types of clouds it have? So we can see that it has Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, App Cloud, your Experience Cloud, Community, and then your Collaboration Cloud. That's Salesforce chatter. What it does not consist of? It does not consist of Education Cloud. It does not consist of NPSP Cloud. It does not consist of Salesforce Einstein Cloud, right? These are the few cloud that does not consist of. It doesn't consist. Data.com, Jigsaw also, it doesn't consist of Jigsaw.
So these are some of the additional tools. Einstein is not there, education is not there, health cloud is not there, and NPSP cloud is not there, of course. So these are actually come up with the paid versions of the Salesforce. With the development edition, of course, these are the things which are not there. What we consist in the development edition? Now we consist of all these clouds. Collaboration cloud is also one of the feature. Let me go to the collaboration cloud. As soon as I click over here, we have been landed onto the home page. Why? Because the collaboration cloud, in short called as Chatter, this Chatter is actually present on the home page. See, we were on to this, we were on to this like Skyline Cloud Solutions. And as soon as, I go to this Salesforce Chatter, I have been routed onto the home tab. Because this Chatter is something like which is actually present on the home tab, right? So this particular area, this particular portion, let me enumerate this. This particular portion is called as Chatter area, or it's a collaboration cloud too. Now, what you can do over here is, let's have a discussion on this. What is the purpose of this Chatter? So, this particular, I could say that it's actually just a communication sort of tool. Whenever I wanted to have a communication between some of the users, between the users of my organization, if I wanted to have a communication so that I could, I could share some messages to them, then I could post some of the files to them. With them, I could plan with the new events, or rather, I could, share a link, then I could poll, I could make some sort of votings. Then I could post some of my questions so that anybody could pick the question and give me the answers. So this is something which is general, it's just like a forum where you discuss something, where you can post something, and where you can initiate a certain type of your communication. So this is something I could tell that it's an internal communication messenger sort of thing, but it is more than just a WhatsApp messenger. It could probably doesn't, where aap video call वगैरह नहीं कर सकते, that's a different story. But then, this is something which is an internal communication messenger sort of thing. So using this feature of collaboration cloud, using this feature called as Chatter, we could merely initiate the communication between different users of our organization. Okay, between different users of the organizations. Now see, users could be two categories. Users could be of the two categories. The one, the one who is the internal user. Internal one, the one who could log into the Salesforce org, and then he could see the different objects, could be standard and custom, something like that. Then there could be few of the users, there could be few of the users, those who are not permitted to see the objects, standard object, custom object. And for example, now let's just take this as an example. Ki maan ke chalo, you are making a CRM product for a newspaper agency. Okay? I mean, if there is an agency, there's a newspaper agency which is asking us to develop one of the CRM application for them. For example, Hitwad. We have a newspaper like Hitwad and Navbharat. Now let's understand this example very carefully. Listen this very carefully and try to understand the concept. Every one of you, just concentrate on my words. So we have this client, Hitwad is our client. And what they are asking us like, we wanted a CRM software from you, that so that we could automate our business process. What we are a news agency, and then we do collect the informations, and we have so many reporters with us, and these reporters submits the informations, kind of news or kind of video or kind of some audio messages. They could even submit us a photograph and the written tip or rather the typed matter of any of the news. This goes to the editor, and then editors, they used to decide, okay, what should be the news. We should actually put this news into the newspaper for the tomorrow's newspaper, or rather we should put this into the Sunday's newspaper, for Saturday's newspaper, or simply we don't want this news to be get published, so simply discard that. तो यहाँ पे अब अगर मैं बात करूं इस तरह की ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का, तो यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी मेरे को नजर आ रही है यूजर्स की. एक यूजर है इंटरनल, जो है
sort of editor, manager, news makers. ठीक है? And these are some sort of people, those who could have, those who are having this administrative control, जिनके पास में, ठीक है, जिनको अपार्ट फ्रॉम न्यूज जिनको बहुत सारी और चीजें भी लगती है, तो लेट्स कंसीडर देम टू बी द इंटरनल यूजर, जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है. व्हाई? बिकॉज दीज आर सम ऑफ द पीपल जिनके पास कुछ ज्यादा राइट्स हैं, जो आपके सीआरएम को कुछ ज्यादा यूज करेंगे. ठीक है, ज्यादा से मतलब हो सकता है कि दे कुड दे कुड सी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आल्सो, दे मस्ट सी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी यूजर्स हैं, न्यूज रिपोर्टर्स, कुछ ऐसे भी यूजर्स हैं एक्चुअली, जिनको अगर हम यूजर क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक्चुअली उनको पूरी ऑब्जेक्ट्स का डेटा नहीं दिखाना है. रादर दे शुड एबल टू यूज ओनली दिस पोर्शन, rather they should only be able to use this particular portion. मतलब जब भी ये यूजर लॉगिन करे कोई रिपोर्टर, तो हम ये चाहते हैं कि उसको सिर्फ इतना ही एरिया दिखना चाहिए. दिस मच इज सफिशिएंट फॉर हिम. यानी चैटर, उसके पास सिर्फ क्या आना चाहिए? चैटर. उसको सिर्फ चैटर ही दिखना चाहिए. व्हाट वी वांट, ही शुड बी ओनली यूज्ड, चैटर एरिया दिखना चाहिए. एंड वी शुड रिस्ट्रिक्ट हिम, वी वांटेड हिम कि ही शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन टैब. ही शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन टैब. उसको सिर्फ एक ही टैब दिखना चाहिए, मतलब होम और चैटर, बस इतना. ठीक है, बाकी जो है ना वो नहीं दिखना चाहिए. बाकी के जितने भी टैब्स हैं यहाँ पे, वो उसको नहीं दिखना चाहिए. वी डोंट वांट हिम कि उसको इतने सारे टैब नजर आए. ठीक है, उसको ये सब जितने भी टैब्स हैं, लेट मी मेक सम एडिटिंग ओवर हियर सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड. उसको एक्चुअली व्हाट वी वांट ओवर हियर इज दैट कि उसको ये सारे टैब्स नजर नहीं आने चाहिए. दिस होल टैब्स, ये सब नजर नहीं आना चाहिए. अगर मैं उसके और के कंपैरिजन करूं तो उसको केवल दो ही कहना चाहिए कि उसके टैब बार पे सिर्फ दो टैब्स हो, होम का टैब हो और चैटर का टैब, बस. ऐसा यूजर मैं कैसे क्रिएट करूं जो सिर्फ कोलैबोरेशन क्लाउड के इस चैटर फीचर को यूज कर सके? जब भी वो सेल्सफोर्स में लॉगिन करे, जब भी वो अपने आईडी और पासवर्ड डाले, तो उसको सिर्फ इतना दिखना चाहिए. ही शुड बी विजिबल ओनली दिस. मतलब वो यहाँ पे कुछ न्यूज को टाइप करे, व्हाट वी वांटेड कि वो कुछ न्यूज को टाइप करें यहाँ पे 1 2 3, कुछ फाइल्स अटैच करें एंड देन शेयर. और जब भी वो शेयर बटन प्रेस करेगा तो दिस गोज टू द अदर यूजर्स, जो भी बाकी यूजर्स हैं उसमें, फिर इंक्लूडिंग योर एडिटर्स एंड द मैनेजर्स, है ना, उन सबको जाएगा. एंड दे विल डिसाइड कि इसको क्या करने का है अभी अपने को. लेकिन ये जो यूजर है हमारा रिपोर्टर, और ऐसे मेरे पास में 50 रिपोर्टर है, 500 रिपोर्टर है, ये लोग जब भी लॉग इन करते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो रिक्वायर टू लॉग इन, है ना, तभी वो अपनी न्यूज को सबमिट कैसे करेंगे? मेल नहीं करेंगे आपको. वी आर बिल्डिंग दिस होल प्रोसेस, ये सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उनके लिए. तो वो यूजर्स भी तो हैं जिनको लॉग इन करना है. हमारे रिपोर्टर्स को भी लॉग इन आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा. एंड वी वांटेड देम कि वो सिक्योर एनवायरनमेंट में ही काम करें. मतलब हमको मेल मत करो, जीमेल पे मेल मत करो, कुछ पे मेल मत करो. यू हैव एनी न्यूज, जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. तो ऐसे जो यूजर्स होते हैं जिनको हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि दे शुड ओनली यूज द चैटर एरिया, दे शुड ओनली यूज द चैटर एरिया, तो फिर ये बाकी जितने भी टैब्स हैं, बाकी जितने भी टैब्स हैं वो उनको नजर नहीं आने चाहिए. ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है बाय मेकिंग chatter free users, by making chatter free users. See, you have this, you have one of the user who is the chatter user. ठीक है, so whenever we create a chatter user, जब भी हम कोई chatter user क्रिएट करते हैं, when he try to log in, whenever he try to log in, he will only access, he can only access the Salesforce chatter area. ये बात, बाकी सारा जो है पोर्शन मुझसे हाइड हो जाता है. Now this user is not able to access any other object. वो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस नहीं कर सकता. This kind of user is sometimes called an external user. हालांकि he is not external, मतलब he is not fully external. Why? Because he is actually we have provided him this login ID and password, and he is also logged into the org. लेकिन क्योंकि वो बाकी चीजें यूज नहीं कर सकता है ना, he can only access this chatter area. वो हमारा रिपोर्टर है, वो सिर्फ न्यूज सबमिट कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता. तो उसको सिर्फ सेल्सफोर्स का कोलैबोरेशन क्लाउड चाहिए. बाकी जितने भी सेल्स सर्विस मार्केटिंग ये नहीं चाहिए उसको, है ना. तो ये किसको चाहिए? एडिटर्स को चाहिए. तो ये वाला जो इस तरह का यूजर जब भी हम क्रिएट करते हैं, तो वी डू रिक्वायर सम लाइसेंसेस कॉल्ड एज चैटर फ्री लाइसेंसेस.
और इसमें और भी लाइसेंसेस जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आइए देखिए। So let's go to the setup menu and let's go to the company profile and then company information. Here we will be listing out the whole licenses what we have. ठीक है, so for this kind of requirement, for this kind of requirement where we wanted somebody just to access the chatter portion, ठीक है, तो हमारे पास जो लाइसेंसेस है उस लाइसेंसेस का नाम है चैटर फ्री लाइसेंस. Total we are having 5,000 licenses for this. One has been already consumed. ये देखो, एक यूजर स्टैंडर्ड हमको बना के मिला है, तो ये भी यूजर बना है, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे कोई भी हो, उसको भी ना चैटर फ्री प्रोफाइल दी गई है और एक लाइसेंस उसको प्रोवाइड किया जा चुका है. One chatter free user license, he is holding one license out of 5,000. He is holding, this person is holding one license. So now we are remaining with what? 4,999. ठीक है, ये हो गई एक कैटेगरी यूजर की जो आपको समझना है, और थोड़े बहुत और है इसमें. ठीक है, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड अबाउट कम्युनिटी. अब कम्युनिटी क्या होती है, तो आइए. Same could be the concept with community. Community, first of all, what is the definition of community? Community is known as the experience cloud. Community is also known as experience cloud. Whenever we wanted to build such kind of project, we should look like a website. It should look like a website. See, IDFC, persistence जो है नागपुर, and I mean not just नागपुर, पर्सी इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है IDFC. So see, ये जो पूरा आप देख रहे हो, this is actually, ये पूरा कम्युनिटी है. This whole is community. Let me click any of them. Let me click any of them. It looks like what? It looks like a website. A feature called as lazy loading. लेजी लोडिंग का मतलब ये होता है कि मैं जैसे जैसे नीचे जाऊंगा वैसे वैसे फीचर्स अपलोड होते हैं. देखो, वैसे वैसे फीचर्स लोड होते हैं. ठीक है, तो दिस एक्चुअली सेव्स द डेटा. पूरा पेज एक साथ लोड होगा तो इट विल इट कुड अफेक्ट द एफिशिएंसी, बट यहाँ पे जितनी चीजें आपको चाहिए सिर्फ उतनी चीजें लोड होंगी, बाकी चीजें नहीं होंगी यहाँ पे लोड. राइट, तो ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली दिस कंप्लीट वेबसाइट हैज बीन बिल्ट. It's a Salesforce. First of all, it's a Salesforce product, and this whole product has been built onto community. ठीक है, तो जब भी हमें Salesforce में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है, whenever we wanted to build up a project, we should, rather than looking like this, ऐसा दिखने के बजाय, community, it should look like a website. It should look like a website. Then we move on to the community. तो हम community कब form करते हैं? Whenever we wanted to build a product, which should look like a website. Which should look like a website, a web page. Then we move on to the community. What are the different types? See, these are something which is really important. ये आपको अपने resume पे highlight करना है. That is why listen it very carefully and please write it down if you don't remember this. What are the different types of community? There are 3 different types of community. There are 3 different types of community: partners, customers, and employees. ठीक है, if you are running a business, who's your partner? Partner could be technology partner, logistic partner, financial partners, legal partners. So the group of that people, if you have a group of that people and you are building a portal for that, then such kind of community is called as partners community. Okay, if we, for our customers, if we are building a portal, then it will be called as to be the customers. और एम्प्लॉयज के लिए तो एम्प्लॉयज, और ऐसा जरूरी नहीं कि सब अलग हो. ऑन अ सिंगल वेबसाइट यू कुड हैव एवरीथिंग. एक कम्युनिटी के अंदर ये तीनों टाइप के पेजेस भी रह सकते हैं, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ द टर्मिनोलॉजीज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिटी: पार्टनर्स, एम्प्लॉय एंड कस्टमर्स. ठीक है, these are the type of community. What is a community? Once again, community is a sort of web page. So inside the Salesforce, if I wanted to build up a project which should look like a web page, rather than a conventional CRM, rather than conventional CRM, ऐसा दिखने के बजाय, या फिर लाइटनिंग में अगर मैं लेके चलता हूँ आपको, तो लाइटनिंग एक्सपीरियंस में जैसा दिखता है, ऐसा दिखने के बजाय, if he wants कि नहीं मुझे ऐसा नहीं दिखना, rather I wanted to be, it looks like a web page की तरह दिखना चाहिए.
then we actually built up, then we actually built up the whole project into the community. Then we actually built up the whole project into the community. So first of all, what is a community? The community is a way. Community is also called as experience cloud. And this is a way in the Salesforce that you could build up a project which looks like a web page. Hope you get the answer. How many different types of community? There are 3 types of community: partners, customers, and employees. Okay. On a single project, even I could include partners, customers, employees. So ऐसा कुछ नहीं है कि सबका अलग-अलग ही web page बनेगा. No, on a single project, I could have few different pages for the partners, few different pages for the customers, and then few different pages for the employees. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. But these are the 3 different types of web pages. These are the 3 different types of communities rather. So whenever we built up a community, the community is for whom? Community is for the people. देखिए community किसके लिए है? Community is for the people. We are building this whole project for the people. लोगों के लिए है. लोगों के लिए. For example, अभी इसमें मैंने IDFC का आपको बताया. Now here, if I go to this, if I press this login button, if I press this login button, now log into new portal, for example. It will ask me, it will ask me for this whole detail, something like that. But if probably I was the existing customer, if I was the existing customer, तो जब मैं अपना यहाँ पे login details put up करूँगा, if I don't log into the old portal, want to upgrade later, log into the old portal. Anyways, so if I'm an existing customer of IDFC, so what I will do, I will enter my username and I'll enter my password, I'll enter my password over here. Then I will be routed into one. मैं कहाँ जाऊँगा? I will be routed onto one of the pages. ये आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं कि when you enter your credentials, your username and the password, you will be going to be land on one of the user page. तो आप जिस page पे जा रहे हो, that will be what? A customer page. If you are an employee of this organization, rather if you are an employee of this organization, there must be something for you also. There must be some. I don't know. I have not searched this website, but probably there must be something for your logins. That if you are an employee of this, you will be again you will be authenticated, and then you are going to be landed on what? Employees portal. If you are the partner, you are funding, you are providing some sort of support to IDFC, then you are a partner of IDFC. You must, if you are login, then you must be landed on this. So this, this is what. So community is built for whom? Community is built for people. Community is built for whom? Community is built for the people. Different kinds of users. Partner is also one of the user. Customer is also one of the user. Employee is also one of the user. And when we want, when we want these users to log in into the org, they must be authenticated. They must have some sort of license. Because see, Salesforce is completely secured. ठीक है. अभी internal license की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ. सब मैं external बता रहा हूँ भैया. Salesforce is completely secured. Whoever wanted to enter into this Salesforce, before even entering the credential, we must create a user, and user must be provided with a license. So whenever to the community, if we are about to create the community, अभी हम करने वाले हैं, and we wanted some of the users that they could access, they could access our community. We must, first of all, the first thing is that we must create the users, community users. We must create the community users. So if I'm at all creating the community user, what are the different types of licenses are available for me? See, I have something called as customer community. I have 5 licenses for this. I have a customer community login. I have 5 licenses for this also. Customer community plus login, customer portal manager, customer portal manager standard. ठीक है. Gold partner, silver partner. ठीक है. work.com, partner community, partner app subscription, partner community login. These many are the licenses. ठीक है. अलग अलग अभी जैसा अभी गोल्ड पार्टनर, सिल्वर पार्टनर, अलग अलग लाइसेंसेस, अलग अलग यूजर्स हो सकते हैं. कस्टमर भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, है ना. कस्टमर, गोल्ड कस्टमर, सिल्वर कस्टमर, ऐसा.
तो उसके हिसाब से सबके अलग अलग लाइसेंसेस हैं। तो व्हाट आई वांटेड टू डिस्क्राइब इज दैट कि इसके पहले एक चीज समझो, समझने शुरुआत कहाँ से करी, कम्युनिटी क्या है, एक्सपीरियंस क्लाउड क्या है, उसका एग्जाम्पल दिखाया। फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कम्युनिटी के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। कम्युनिटी हो सकती है पार्टनर्स की, कस्टमर्स की, एम्प्लॉयज की। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एजुकेशन क्लाउड पे काम कर रहे हैं तो कम्युनिटी कुड बी ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द स्टूडेंट भी हो सकता है ना। कम्युनिटी कुड बी ऑफ द टीचर्स हो सकता है। अगर आप एजुकेशन क्लाउड पे, कम्युनिटी कुड बी ऑफ द मैनेजमेंट मैनेजमेंट पीपल हो सकता है ना, ऐसा अलग अलग। तो कम्युनिटी अलग अलग तरह की हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा पार्टनर कस्टमर, बट ये कुछ बेसिक टाइप्स हैं, ऐसा कहने का मतलब है। बट वो डिपेंड करता है हम कौन से प्रोजेक्ट में, ऐसा जरूरी नहीं कि हम यही रहे हर बार, कुछ भी हो सकता है ना ऐसा। तो जब भी ये यूजर्स इफ दे विल ट्राई टू लॉग इन इनटू द ऑर्ग, कैसे लॉग इन करेंगे, वी मस्ट क्रिएट द यूजर्स फॉर दैम। उनके लिए पहले यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। यूजर क्रिएट करेंगे तो फिर से वही बात आती कल जो हमने पढ़ा कि whenever we wanted to create the user, what are the things that are mandatory, whenever we wanted to create the users, actually there are 3 steps. Out of the 3, 2 is mandatory. We must provide him a license, we must provide him a profile. These 2 things are mandatory: assigning a license and assigning a profile. These 2 are mandatory. So what we are talking right now, we are discussing about licenses. तो अभी हमने एक कम्युनिटी बनाई है, वी बिल्ट अप अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बनाई है। कम्युनिटी में हमने काफी सारे यूजर्स ऐड करने हैं। वी वांटेड अवर कम्युनिटी। कम्युनिटी किस लिए बनती है? यूजर्स के लिए बनती है। आप अपने लिए कम्युनिटी नहीं बनाओगे। यू वांटेड दिस टू बी गेट शेयर्ड अमंग डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स। यू वांटेड दिस टू पब्लिश टू यूजर। जब कम्युनिटी बनती है वो किसके लिए बनती है? सो दैट आई कुड पब्लिश इट टू द डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स। तो कम्युनिटी बनाने का अल्टीमेट एम क्या है? We wanted this to be get published to different users. We wanted to expose this community to different users so that they could also become the part of this community. तो जब आपको यूजर्स, अगर आप है ना कम्युनिटी यूजर्स के लिए बना रहे हैं एंड वी यू वांटेड देम टू गेट इंटरेक्टेड विद द कम्युनिटी जो आपने बनाई है, यू वांटेड देम टू इंटरेक्टेड विद व्हाटएवर द पोर्टल यू हैव क्रिएटेड, तो उसके लिए आपको सेल्सफोर्स में उनका रिलेटेड यूजर्स बनाना पड़ेगा। तो वो यूजर क्या कहलाते हैं? कम्युनिटी यूजर। इसके बहुत सारे टाइप है ना, इसके बहुत सारे टाइप हैं। कस्टमर कम्युनिटी, पार्टनर कम्युनिटी, गोल्ड पार्टनर, सिल्वर पार्टनर, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। वो छोड़ दो, हर टाइप के लाइसेंसेस में अलग अलग चीजें होती है, और ये चीजें मैं बताऊं धीरे धीरे सीखता है इंसान। जब भी आप कम्युनिटी बनाओगे कभी आगे चल के, अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे क्रिएट करना, और आगे चल के फिर आपको पता चलेगा कि अलग अलग यूजर्स के अलग अलग लाइसेंसेस में हर लाइसेंस के फीचर क्या होते हैं। तो वो पढ़ना पड़ता है, एक एक लाइसेंस की डिटेलिंग। फिर डिसाइड करना पड़ता है कि अगर यूजर है तो उसको ये वाला लाइसेंस दो, स्टूडेंट है तो ये वाला लाइसेंस दो, टीचर है तो ये वाला लाइसेंस दो। तो वो पढ़ना पड़ता है, एक एक लाइसेंस के फीचर डिस्कस करने पड़ते हैं। और ये देखो पॉसिबल नहीं कि सारे लाइसेंसेस पढ़े जा सकते, लेकिन हमको एक आइडिया होना चाहिए। कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी लाइसेंस लगता है, चैटर के लिए चैटर लाइसेंस लगता है, इंटरनल एक्सेस करने के लिए सबसे बेस्ट जो लाइसेंस है वो है सेल्सफोर्स लाइसेंस, सबसे बेस्ट। अदरवाइज प्लेटफॉर्म लाइसेंस, लेकिन प्लेटफॉर्म लाइसेंस से कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं। कुछ चीजें हैं जो आप प्लेटफॉर्म लाइसेंस से एक्सेस नहीं कर सकते। क्या है मैं डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी, बिकॉज हम यही 2 लाइसेंसेस पे काम करने वाले हैं। तो इसके पहले कि हम इस पे आगे बढ़े, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है? अब चलो यहाँ तक आपको पहुंचा दिया है, तो एक स्टेप थोड़ा सा और लेके जाता हूँ, और आपको मैं एक एक्स्ट्रा कहना चाहिए कि आउट ऑफ द बॉक्स, जो इस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे कम्युनिटी क्रिएट करते हो, ठीक है? हाउ टू क्रिएट द कम्युनिटी इनसाइड दिस। तो उसके लिए क्या है कि गो टू द सेटअप मेनू एंड देन एक्सपैंड द कस्टमाइज। यहाँ पर आपको एक डिजिटल 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 एक्सपीरियंसेस, सी ये एक लिंक मिलेगी। सो व्हेनेवर फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, ठीक है? जब आप इनेबल करोगे तो यहाँ 2-3 ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी आप देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर एक्चुअली बिल्डिंग द कम्युनिटी, अभी मेरे और पे डिजिटल एक्सपीरियंस जो है वो इनेबल नहीं है। तो बस यहाँ पे एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है मुझको, सेटिंग्स, राइट? मेरे को एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे, सेटिंग्स का। तो अब एक, हाँ सी, तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि डिजिटल एक्सपीरियंस में ना वी कुड सी दैट देयर इज ओनली वन ऑप्शन, राइट? तो ये मैं यहाँ पे कॉपी करके रख देता हूँ, एंड देन वी विल इसके बाद देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू इनेबल दिस। तो आपको सबसे पहले यही करना है ना, यू नीड टू गो टू द सेटअप मेनू,
जब आपको कम्युनिटी इनेबल करना है तो पहले कम्युनिटी बिल्ड करने से पहले कम्युनिटी इनेबल करना पड़ता है। तो गो टू द सेटअप मेनू, देन एक्सपैंड द कस्टमाइज, देन गो टू दिस डिजिटल एक्सपीरियंसेस, उसके बाद क्लिक ऑन द सेटिंग्स। ठीक है, क्लिक ऑन द सेटिंग्स। नाउ देयर इज अ चेक बॉक्स, इनेबल डिजिटल एक्सपीरियंसेस, इनेबल डिजिटल एक्सपीरियंसेस। सो इट विल आस्क यू ए डोमेन। देखो हर वेबसाइट का अपना एक डोमेन होता है, लाइक IDFC, ये डोमेन है मेरा, दिस इज वन ऑफ द डोमेन, IDFC बैंक। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज एक्चुअली योर domain is the name of that website. Domain is the name of Union Bank of India is the domain name, right? Union Bank of India. तो आप भी एक वेबसाइट बना रहे हो, यू आर ऑल्सो बिल्डिंग वन ऑफ द वेबसाइट, तो यू मस्ट सप्लाई कि इसका डोमेन क्या होना चाहिए। आई एम गिविंग दिस हैज टू बी लाइक SFDC बैच 201 एंड लेट मी सी कि मैं देखता हूँ कि अवेलेबिलिटी है क्या इसका। नो, SFDC बैच 201 is already being taken, so I must go with some other name. Here rather I have typed batch. Now 201 SFDC batch. Let me go with this. No, this is also has been taken. This is something which is unique, That's why, we should supply a unique kind of name. Skyline. Oh my God. This has also been taken. Skyline SFDC batch 20. Let me check. No, something else. So Skyline 201, I'm actually building one of the web page, एक web page बना रहा हूँ मैं with this name. अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट, ये जो web page अभी बना रहा हूँ, ये Salesforce का इंटरनल है। आप ये मत सोचो कि ये URL पर आपको ये मिल जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको Salesforce पे लॉग इन करना है, उसके बाद नहीं मिल सकता आपको ये, ठीक है। तो दिस नेम इज एक्चुअली अवेलेबल, Skyline 201. So let me go with this, enable the digital experience and register domain. Yes. So eventually it will take some time, but this is going to build up the website. You can't change the domain name relations after once you enable. Okay, I'm agree with that. Okay. So now, we have been enabled. अब आप चलो वापस से यहाँ पर digital experiences में। अब देखो यहाँ पर आप कितने options आ चुके हैं, है ना? These whole options come when you enable digital experiences. जब आप enable करते हो उसके बाद में आता है। अब आप खुद ही compare करो इसको, ठीक है? This is like that. तो ये इतने ऑप्शंस आप खुल जाते हैं बाद में, ठीक है। चलिए, सो नाउ वी हैव ऑल साइट सेटिंग्स वगैरह, सेटिंग्स में सब बाद में जाएंगे। तो लेट्स क्रिएट अवर ओन वेब पेज, लेट्स क्रिएट द कम्युनिटी। सो इन द डेवलपर एडिशन, हाउ मेनी पेजेस, हाउ मेनी साइट्स you could create maximum 100 web pages. See, this is the governor limit. You could write it down. Inside your developer edition, how many websites, how many published, unpublished sites, whatever. You could create maximum 100 websites, not more than that. 100 web pages. Okay. So let me click this new button. So now we are going to route कि अब हम जा रहे हैं community की तरफ में, ठीक है। और see, this is something additional I'm telling you. This is actually something which is additional. अब यहाँ पे it will ask you कि आपको, I mean, what sort of community you are creating? Business to client, you are building something for your client, and then these are few of the new templates, but ये disabled है.
और समथिंग लाइक हेल्प सेंटर या कस्टमर अकाउंट, यू जस्ट वांटेड टू मेंटेन कस्टमर सर्विसेज। इसमें से जो भी एक टेम्पलेट आपको सूट होता है यू कुड टेक दैट टेम्पलेट। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस कस्टमर सर्विस, ठीक है। तो कस्टमर सर्विस जो है इसके बारे में फिर वो बताएगा कि ये कैसा है, ये कैसा लुकआउट है इसका, किस तरह से दिखता है, समथिंग लाइक दैट। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नॉट श्योर व्हाट टू एंटर, एंटर अ नेम, डोंट वरी यू कैन ऑलवेज चेंज, ठीक है। अभी आप नाम डालो तो ठीक है, अगर नहीं डाला तो भी चलता है। तो मैं दे रहा हूँ दिस इज एक्चुअली यू नो एफडीसी बैच BATCH बैच 01 community, ठीक है। This is the community I'm creating. So it will take some time to build up the templates in the backend, but we will understand like how we can, how we could create the own community inside the Salesforce. And this is an area, this is an area जहाँ पे आपको lightning पता होना चाहिए। तो आप lightning के साथ इसका जो combination है वो बहुत ही यूजफुल है। मतलब ये एक, आज मैं आपको एक इनपुट दे रहा हूँ कि आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए आगे चल के आप कभी कम्युनिटी पे माइग्रेट हो सकते हो, इसके लिए आपको लाइटनिंग आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लाइटनिंग कंपोनेंट्स, ऑरा कंपोनेंट्स, LWC, इवन लाइटनिंग पेज, ये सब चीजें थोड़ा सा कम्युनिटी को हाईलाइट कर देता है। ऐसा नहीं है कि सेल्सफोर्स क्लासिक नहीं चलता, चलता है ऑफकोर्स, लेकिन लुक एंड फील पे फर्क पड़ता है। तो इसका लुक एंड फील कम्युनिटी का तब अच्छा आता है व्हेन यू कोलैबोरेट दिस कम्युनिटी विद द लाइटनिंग, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैसा बिल्टअप करते हैं कम्युनिटी। इट्स ऑलमोस्ट लोडिंग। तो दिस साइट इज बीइंग क्रिएटेड, राइट। अब ये क्रिएट होने के बाद में लेट्स गो टू द बिल्डर। अब ये इसका पूरा स्टडी है, दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू टॉट इन द कम्युनिटी क्लाउड कि व्हाट इज दिस ऑप्शन, दिस ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज फॉर। तो अभी मैं उतना तो ऑफकोर्स नहीं बता सकता, यू कुड इवन अंडरस्टैंड दैट, बट ठीक है, मैं आपको बेसिक ऑप्शंस के साथ में शुरू करता हूँ। सो सी, now this is my web page. अब इसमें सारा काम करना है, here you wanted to everything. For example, let me change the theme of this, let me change the theme. So if I go up with this, let me activate this theme for this. See, and then यहाँ पे फिर एक मिनट मैं इसको आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी लुक लाइक। अब आपको जो करना है वो करो, ठीक है। इसमें फिर कैसा है कि आपको ये बटन चाहिए या नहीं चाहिए, यहाँ क्या रखना क्या नहीं रखना है ना। तो दिस इज हाउ योर कम्युनिटी पेज हैज बीन बिल्ट अप। अब इसमें अलग अलग टैब्स ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। बैक टू बिल्डर, यहाँ पे फिर इसके सारे ऑप्शंस रहते हैं, व्हाट यू वांटेड, आपको कौन सा कंपोनेंट ऐड करना है। फॉर एग्जांपल यू वांटेड टू ऐड कैलेंडर, कैलेंडर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है। कैलेंडर हो गया, ये देखो कैलेंडर आ गया, ठीक है। यू वांटेड टू सी प्रीव्यू, प्रीव्यू देख लो, ठीक है। इस तरह से कैलेंडर यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो भी है। तो दिस इज हाउ दिस इज हाउ वी आस्क फॉर द कंपोनेंट्स। अब कौन सा कंपोनेंट ऐड करना है यहाँ पे। इफ यू हैव बिल्ट अप सम ऑफ द विजुअल फोर्स पेज, वो भी आप यहाँ पे ला सकते हो, बट ज्यादा अच्छा होता है कंपोनेंट्स। सबसे नीचे में आएगा आपका अदर कंपोनेंट्स। तो जो भी आप लाइटनिंग के कंपोनेंट्स बनाते हो यहाँ पे लिस्ट आउट होते हैं, दैट वी एक्चुअली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, बस इतना ही करना पड़ता है, ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको चाहिए तो जस्ट पुट इट ओवर हियर, ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो भी है, ठीक है। वो कितने टॉपिक्स, 5 टॉपिक। तो ये कैसा हो रहा है, आई मीन दिस, यू आर बिल्डिंग योर ओन वेबसाइट, यू आर बिल्डिंग सम ऑफ योर वेब पेज, समथिंग लाइक दैट। इसको सीखना पड़ता है एक्चुअली, इट नॉट जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सीखना पड़ता है। सो काफी कुछ उसमें, फिर पेज स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी सेटिंग्स कैसी होती है ना, कौन सा पॉइंट किसके लिए होता है। तो बट बाय द वे, this was an introduction how to build up your own community. Now if someone asks you this, what is this experience cloud, ये क्या होता है community cloud, experience cloud, you need to start saying that community या फिर experience cloud is a way in the Salesforce, so that we could build up we could build up the projects which looks like a web page, which looks like a website. See how does it looks like, if I publish this, मैं इसको publish कर देता हूँ तो अब इसका एक मेल आएगा मुझको, ठीक है। इफ आई पब्लिश मतलब लॉन्च करना होता है, तो मैंने इसको पब्लिश किया, ओके गॉट इट। तो अब इससे रिलेटेड जो हमने जो भी ईमेल बनाया है, सो व्हाट इज द ईमेल 201,
वहां पर इसका एक ईमेल आता है आपको, आई नीड टू गो विद दिस ईमेल आईडी। यहाँ पे बताया कि आपकी साइट पब्लिश हो चुकी है, मतलब वॉट एवर सी साइट एडमिनिस्ट्रेटर, साइट हैज बीन पब्लिश, यू वांटेड टू सी, गो विद दिस। यहाँ पे लिंक आ जाता है। तो ये है आपका अभी जो दिखेगा आपको, दिस इज योर एंड प्रोडक्ट, ये है SaaS, ये है SaaS। तो ये इतना बनाया है आपने, देखो ये पब्लिश हो चुका है। इसको अब कोई यूजर सिर्फ क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, ही कैन नॉट मेक द चेंजेस। अगर आप ये, अगर है ना, इफ यू वांटेड कि अगर आप इसको कॉपी करके डाल के कहीं और जाओगे तो ये ऐसे नहीं खुलने वाला। बिकॉज अभी मैं लॉग इन किया हुआ है यहाँ पे, विद माई क्रेडेंशियल्स में लॉग इन किया हुआ है, दैट इज वी आर एक्चुअली एबल टू सी दिस। अगर मैं यहाँ सबसे लॉग आउट हो जाऊं और उसके बाद में अगर मैं देखूं तो फिर नहीं होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना पड़ता है हमको, मतलब ओनली द ऑथेंटिकेटेड यूजर्स कैन डू दिस। जो ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हैं दे कैन ओनली सी दिस। ये कम्युनिटी पेज है हमारा, ये वेबसाइट नहीं है। कम्युनिटी और वेबसाइट के बीच का डिफरेंस क्या हो सकता है? कम्युनिटी के और वेबसाइट के बीच का डिफरेंस ये होता है कि कम्युनिटी पेजेस आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द कम्युनिटी। मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 लोग हैं तो वो 100 लोग, फिर अगर मेरे कस्टमर्स हैं वो 100, तो वो सारे 100 कस्टमर। मेरे 50 पार्टनर है तो वो सारे 50 पार्टनर। ठीक है, नाउ दे कैन ओनली एक्सेस दिस वेब पेज। और वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट इज जनरली, वो सबके लिए अवेलेबल है, बिकॉज वो वर्ल्ड वाइड वेब पर है, www पे है। दिस इज नॉट अवेलेबल ऑन www। ये रादर, इसका आप देख लो, इसका लिंक क्या है, https skyline developer edition ap27.force.com। दिस इज सिक्योर्ड। इसके लिए ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तभी वो यूजर इसको एक्सेस कर सकता है। तो एक कम्युनिटी पेज और वेबसाइट के बीच में यही डिफरेंस होता है। कम्युनिटी पेजेस आर ओनली एक्सेसिबल बाय द कम्युनिटी पीपल, बाय द ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, जो यूजर जो आप ही क्रिएट करोगे, एंड देन यू विल अलाउ देम टू एक्सेस दिस पेज। ठीक है, एंड दे कुड व्हाट सी, दे विल सी दिस SaaS पार्ट, ये SaaS है। देखो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं कर सकता। हाँ, आपको चेंज करना है ना, यू आर हियर, यू आर द साइट एडमिनिस्ट्रेटर, यू विल मेक द चेंजेस ओवर हियर, आप चेंजेस करोगे। वट एवर द कंपोनेंट यू वांटेड टू ऐड है ना, आपको यहाँ पे आस्क बटन ऐड करना है, जैसे ऐड दिस आस्क बटन समवेयर ओवर हियर। कहाँ पर ऐड होता है देखना पड़ता है। एग्जाम्पल, आई वांटेड टू आस्क बटन, एक आस्क बटन ऐड करना है, मैं ये आ गया आस्क बटन। ठीक है, अब ये मैंने चेंजेस किया। एवरी टाइम वेन एवर वी मेक एनी चेंजेस वी नीड टू पब्लिश दिस। अब जब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो अगली बार फिर इसका एक और ईमेल आएगा, फिर मैं एक्सेस करूंगा उसको, तो मुझे नया कॉपी, फ्रेश कॉपी मिलेगा। तो ये होता है वेबसाइट को पब्लिश करना, और इस तरह से बनते कम्युनिटी पेजेस। तो डिफरेंस क्या है कम्युनिटी और वेब पेज में? सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, कम्युनिटी पेज जो है ना वो ओपनली एक्सेसिबल नहीं होता है। वेब पेज, वेबसाइट ओपनली एक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि वो www पर है, वर्ल्ड वाइड वेब पर है। और कम्युनिटी कहां पर है? सेल्सफोर्स और के अंदर है। इसको कौन एक्सेस कर सकता है? ये जो मैंने बनाया है इसको कौन एक्सेस कर सकता है? इसको वही एक्सेस कर सकता है, ये सारे यूजर्स नहीं, इसको वही एक्सेस कर सकता है जब मैं एक यूजर क्रिएट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, कौन सा यूजर? कम्युनिटी यूजर। उसके लिए मुझे कौन सा लाइसेंस देना पड़ेगा? मैं एक यूजर क्रिएट करूंगा, 1 2 5 10 12 जो भी, और यूजर क्रिएट करने के बाद आई एम गोइंग टू गिव देम लाइसेंसेस, जैसे कम्युनिटी प्लस लाइसेंस, पोर्टल लाइसेंस। पोर्टल मैनेजर तो नहीं देंगे हम, वो हमारे तक सीमित रखेंगे हम। लेकिन जैसे दूसरे पार्टनर कम्युनिटी है ना, कस्टमर कम्युनिटी, ये लाइसेंसेस हमको बना के देने पड़ेंगे। तो दे कैन, दे विद देयर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, दे कैन एक्सेस दिस, ओनली दे कैन एक्सेस दिस। और कोई ट्राई करेगा तो नहीं होगा। तो ये होता है कम्युनिटी और वेब पेज के बीच का डिफरेंस। तो आप भले शुरुआत करोगे इस आंसर की ये, if someone asks you this, what is a community or what is an experience cloud, what you need to say, if you wanted to build a project, a CRM project, in such a way that it should look like a web page, rather than the conventional CRM, like it looks, the look and feel what we see in the classic as well as in this uh, lightning एकदम दिमाग से slip होता है, lightning. I mean, instead of seeing that insert into the Salesforce Classic and Lightning, if the client want us that it should look like a website, then in that case, we built up the project. We built the project with a community, with the Experience Cloud. So what is a community? Community is a way to represent your CRM as look as a website. Community is a way that you can represent your CRM application to be a web page, to be a website, just as good as a website. But then what is the difference between community and website? Website is accessible by everyone. Community is not accessible. Community is only accessible to the authenticated users, the users that we have created inside the Salesforce.
And then we have given them the licenses like customer community license, partner community license, customer login license, partner login license, gold partner license, silver partner license, customer community plus license, portal manager custom license. There are so many licenses. We created the user inside the organization with all these kind of license. Now these people could access the community. Not everybody can access. This is the fact. अब कम्युनिटी क्लाउड खुद एक स्टडी भी है, ये भी समझो. मैं यहां तक इस पॉइंट पे लाके ही छोड़ सकता हूं आपको, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए एक तो आपको लाइटनिंग पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली लाइटनिंग एक्सपीरियंस और कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट. उसके बाद आप कम्युनिटी, और कम्युनिटी खुद अपनी स्टडी भी है. मतलब कम्युनिटी के ऊपर में भी पढ़ना पड़ता है कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दैट आर ओवर हियर. कौन सी थीम, किस तरह के बिजनेस टू क्लाइंट के लिए कौन सी थीम, बिजनेस टू बिजनेस के लिए कौन सी थीम है. तो इट्स लाइक अ स्टडी. ठीक है. लेकिन एक बिगनिंग लेवल पे जितने जानकारी हमको चाहिए इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, वो सारी की सारी दी है मैंने आपको. I'll ask Sachin to take one introductory lecture if you guys are interested. I mean, how to go beyond this. अब इसके आगे कैसे जाना. I'll ask Sachin because Sachin is actually working on IDFC project. So he is the person who is, he's well-handed in this community. Even if for my project also, when I got some stuck, I used to ask him कि यहाँ पर अभी कैसा करते हैं इसको. So he also used to guide me because he is kind of a resource person for this thing. So उसके आगे अगर आपकी इच्छा होगी तो आप लोग मुझे बताना. I'll ask him to take one session on this community cloud, probably on Sunday जब भी वो फ्री रहता है. ठीक है. सो गाइज ये था कम्युनिटी. तो अब तक मैंने आपको जो चीजें बताई, दो चीजें बताई. देखिए सेल्सफोर्स में दो तरह के लॉगिन्स होते हैं. एक वो होता है जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं, आप मैं एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करते हैं. जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो वी हैव एवरी ऑप्शंस अवेलेबल विद अस, एवरी ऑब्जेक्ट अवेलेबल विद, ऑल स्टैंडर्ड, ऑल कस्टम. But we wanted few of the people to be get restricted with only few functionalities. जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि अगर आप एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपने रिपोर्टर्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिर्फ चैटर पे, एंड यू इंटेंशनली डोंट वांट, सिर्फ इतना दिखेगा उसको. देखो मतलब अगर एक सेकंड में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इफ ही वांटेड, अगर वो उसको देखना है तो उसको क्या दिखेगा. लेट मी शो यू दैट. अगर रिपोर्टर लॉगिन करेगा ना, उसको सिर्फ इतना दिखेगा. ये देखो सिर्फ इतना दिखेगा. ही विल ओनली बी एबल टू सी अप टू दिस, बस. तो ऐसा यूजर को अगर सिर्फ चैटर ही दिखाने का है एंड ही कुड ये सारे ऑप्शंस नजर आएंगे उसको, बस. तो आपको क्या क्या करोगे उसके लिए. तो आप एक यूजर बनाओगे. कौन सा यूजर बनाओगे. चैटर यूजर बनाओगे. कैसा लाइसेंस दोगे. चैटर फ्री लाइसेंस दोगे. तो जाके वो लॉगिन करेगा, फिर वो अपनी न्यूज टाइप कर सकता है, पोस्ट कर सकता है, शेयर कर सकता है, और जो भी चैटर कोलैबोरेशन क्लाउड के जो भी फीचर्स हैं दैट ही कुड एक्सेस. ठीक है. ये हो गया. दूसरा मैंने आपको कम्युनिटी बताया कि अगर आप कम्युनिटी पे जा रहे हो तो कम्युनिटी भी ऐसा है कि कम्युनिटी वेबसाइट नहीं है कि जिसको कोई भी औने पौने उठा के मुंह उठा के आ जाए एक्सेस कर ले. कम्युनिटी एक्सेस करने के लिए भी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, यूजर्स रिक्वायर्ड है. वो यूजर कौन क्रिएट करेगा. हम ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डू दैट. हम वो करने वाले हैं ना. उसके लिए हमको यूजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे. व्हाट काइंड ऑफ यूजर. कम्युनिटी यूजर्स. कम्युनिटी यूजर्स के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं. ठीक है. ऐसा. तो ये चीजें बेसिकली आज हमने पढ़ी है. एक्चुअली आज हमने सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं पढ़ा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जो आज पढ़ा ना वो भी बहुत जरूरी बात थी. ठीक है. सिक्योरिटी तो अभी पूरा पढ़ना ही है अपने को, लेकिन आज जो हमने पढ़ा दैट वाज एसेंशियली इंपॉर्टेंट. कैंपेन्स, कैंडिडेट. आई डोंट थिंक आई रिक्वायर ऑथर. केसेस आई रिक्वायर. इवन कैंपेन्स की भी जरूरत नहीं है मुझको. अकाउंट्स आई रिक्वायर्ड. कैंडिडेट also I required. Cases I require. Contacts I require. Customers I don't require. Documents अभी तो जरूरत नहीं है, छोड़ दो. And then hiring managers, I probably require this also. And then I also require leads, and then opportunities also I requires, and then payment people, position, products, price book नहीं चाहिए. reports like I want this. बस इतना है. ऐड कर लेता हूँ. ठीक है. इसमें से I wanted this hiring manager, ये नीचे आ जाए.
position. Candidate also I wanted here to come over here. Reports को ऊपर लेके जाता हूँ. ठीक है. Save it. Okay. So ठीक है इतना. So अब इसके बाद next is will be Monday. Monday को what we are going to see is like कि अब हम licenses के ऊपर करेंगे. कितने users हम लोग create करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. So importantly we are going to create these two users. Salesforce license और platform licenses को use करेंगे. So we are going to start, on Monday, for the next lecture, we are going to start again, not with exactly with the license overview, rather with the available licenses. Okay, let me stop this.